Yeah, I have a small function. I'll be on the meet. I'll be hearing your voice, but I may not respond sometimes because like yeah. Okay, But I'll Brian. be Yeah, here. that's fine. That's fine. That's fine. I guess today's class is completely about recording, so everyone is going to record. I mean, watch the recording at the end. Yeah. Okay. All right. So I have this domain purchased razi.store today. So with this purchase domain, I have created a on-premises environment. Okay, on-premises Active Directory environment. Okay, this is my lab server again. So Uzma would be able to recall, but Ishaq, I mean, you were not part of the Azure, I mean, the on-premises Active Directory training, right? So in an Yes. on-premises Active Directory, we will have a Active Directory server in place. So if you will go through the recording, you will understand what is on-premises Windows Active Directory. Okay. So Yes. Okay. before Azure, it was everything was there in on-premises. Before cloud environment, everything was into Windows Active Directory. Yes. Okay, so here I have a domain created over here. ADDS is configured. Okay, so let's go to the Active Directory users and computers. You will see a domain created with the same name, razi.store. Okay, Okay. so with this Yeah. same domain, I have created an on-premises environment. I have created some users inside this just for testing. Okay, so Ibrahim, Ishaq, Raghu, Tariq, Uzma. Okay, so I've got like Mujahid. So I've got like 6 custom users. So these other users comes by default, right? So apart from that, I've just created 6 users over here. So let's put these users to a different OUs, organization units. So I have like Organizations. network team, database team, security team. Okay, so I have created some OUs. So I'll move people over there. So Ibrahim and Ishaq will be part of security team OU. Okay, and then Tariq and Uzma will be moved to network team. And then Mujahid and Raghu will be moved to database team. Okay, so we have got 2 users under database team, 2 users under network team, and 2 users under security team. Okay, so we have an on-prem environment now. Just think about like a Wipro company. I mean, the same example we have discussed in our previous session, right? तो Yes. just think of like ये एक company है जो काफी time से run हो रही है in on-premises only. They have multiple users created in their on-prem itself, and they have been functioning their environment with on-premises Active Directory only. Now this company has decided to move into cloud Azure environment. ठीक है, तो पहली चीज Okay. क्या करनी होती है क्लाउड में मूव होने से पहले, ये जो डोमेन है, ये डोमेन को एजोर के टेनेंट में जाके वेरीफाई करना है. ठीक है, पहले तो एक एजोर टेनेंट उन लोग को खरीदना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आप लोग ने खरीदा है ना, द वे यू हैव क्रिएटेड योर टेनेंट्स. आई मीन Hmm. यू हैव इनिशिएटेड विद द फ्री ट्रायल. फिर आप वो फ्री ट्रायल जैसे खत्म होगा, फिर उसको आप पेमेंट करोगे, फिर यू विल हैव योर ओन परचेज्ड टेनेंट, राइट? तो Yes. वैसे ही पहले तो क्या करेंगे, एक टेनेंट खरीदना होगा. ठीक है, वो तो आप लोग ने देख लिया है ऑलरेडी, हाउ टू क्रिएट So, अ टेनेंट. specify सो one doubt. यस, यस. So these tenants, we can add as many members as we can in the tenant, or there will be a separate tenant for administrator. नहीं नहीं, टेनेंट देखो, टेनेंट ना, टेनेंट क्या है, टेनेंट आपका आपका जो एनवायरनमेंट है, टेनेंट इज नथिंग बट इट्स योर एनवायरनमेंट इन क्लाउड. ठीक है, क्लाउड में आप थोड़ी जगह खरीद रहे हैं बस. ठीक है, एक Okay. क्लाउड है, क्लाउड में थोड़ी सी जगह माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है कि आप आपका एनवायरनमेंट वहां पे बना लो. ठीक है, And एश्योर. depend on our requirement, we can expand the storage. And, एग्जैक्टली, तो आप एश्योर में थोड़ी स्पेस खरीद रहे हैं बस. टेनेंट इन द सेंस अच्छा.
थोड़ी सी स्पेस खरीद रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट वहां पे बिल्ड होगा, योर कंपनी Oh, will be I mean, your company environment will be structured over there in a Azure got it. tenant. ठीक है, तो उसमें आप Yeah, एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई सेपरेट नहीं करेंगे आप, आई मीन योर कंप्लीट एनवायरनमेंट विल बी देयर। उसमें आप परमिशंस डिफाइन करो आरबैक के थ्रू, कुछ यूजर को यूजर एक्सेस दो, किसी को एडमिन एक्सेस दो, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बट योर टेनेंट इज योर कंप्लीट एनवायरनमेंट इन एजोर। ठीक है, आपकी yeah, पूरी got it, कंपनी got it. Got टेनेंट है एजोर में। it. So now I'll go to the Azure portal. So for everyone, the URL is same, portal.azure.com. It's just that you have to provide your username and password to access your specified tenant. Oh, okay. ठीक है, I'm logged into my Azure tenant. Now in this, I will go to Azure Active Directory Blade. This is the Azure Active Directory Blade. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, we have something called custom domain names. Sorry. यहाँ पे मुझे मेरा नया जो टेनेंट मुझे क्या हो गया, तारिक, हाउ अबाउट मी, यू शुड बी इन ऑलरेडी, वन सेकंड, ओके, हेलो तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आई डिडंट नोटिस यू वर देयर इन द लॉबी, ओके, सॉरी डिले हो गया मैं। राइट, सो तारिक, वी हैव आवर ओन डोमेन, ठीक है, ओके new domain with which we have on-prem environment setup, that is resi.store. ठीक है, अभी ये डोमेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एजोर टेनेंट में वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कस्टम डोमेन, यहाँ पे आपका आएगा resi डॉट स्टोर। अभी यहाँ पे क्या बोलेगा ये कि these records you have to share with your domain provider, then only it will be verified as a purchase domain. तभी पता चलेगा कि आपका ये मतलब खरीदा हुआ डोमेन है या नहीं। अगर ये रिकॉर्ड्स आपका डोमेन प्रोवाइडर अगर अपडेट करता है ग्लोबली, then only it will be identified as a purchase domain and it will be verified, right? तो अब ये क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस, मेरा डोमेन प्रोवाइडर है ये होस्टिंजर जहाँ से मैं डोमेन खरीदा, यहाँ पे मैं जाऊंगा डीएनएस रिकॉर्ड्स, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करूंगा जो मुझे यहाँ पे एजोर ने बोला है। कौन सा रिकॉर्ड ऐड करना है, टीएक्सटी रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे टाइप है टीएक्सटी, फिर @ that is the same, txt value should be this one, ठीक है, then ttl is this one। ये मेरे डोमेन प्रोवाइडर पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, दैट इज होस्टिंजर, ऐड। ठीक है, ये रिकॉर्ड ऐड हो गया, ये नीचे दिखेगा txt वाला, this one, this is the record। Now once it is added, if I go back and I say verify, successfully verified, okay, I don't want to make it as a primary one as of now. If I go back, now you will see resi.store is a verified domain in this tenant,
Okay, understood? Any doubts? Kuch doubts hai? No doubt. Okay. So this is how a domain has been added. अभी क्या करना है, एक्चुअल काम अब क्या है, ऑन प्रेम एनवायरनमेंट को सिंक्रोनाइज करना है अजोर में, ये टेनेंट में। ये जो मेरा जो टेनेंट है, ये टेनेंट में मुझे resi डॉट स्टोर जो ऑन प्रेम में कॉन्फ़िगर्ड है, रनिंग है, वो resi डॉट स्टोर वाले एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को यहाँ पे लाके सिंक्रोनाइज करना है। हाउ टू डू दैट? विद द हेल्प ऑफ Azure AD कनेक्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है, वापस मैं यहाँ पे आया। ठीक है, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, ऑन प्रेम डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे मैं क्या किया, ब्राउजर से मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। ये सॉफ्टवेयर इज Azure AD Connect सेटअप फाइल। वो कैसे किया, मैं सीधा गूगल मीन यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम गूगल इटसेल्फ। ठीक है, आप गूगल करोगे यहाँ पे डाउनलोड AD कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं सेटअप फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं ऑलरेडी कर चुका, यहाँ पे डाउनलोड्स में एक फाइल है। ठीक है, नाउ आई विल सेट अप दिस, आई विल एग्जीक्यूट दिस सेटअप फाइल। अभी Azure AD Connect सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कहाँ पे, मेरे डोमेन कंट्रोलर पे, जहाँ पे ये सब सेटअप कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, resi डॉट स्टोर इट्स ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये AD Connect सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ओके, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, कंटिन्यू। आई वुड लाइक टू कस्टमाइज। यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आई डोंट वांट टू इंस्टॉल अ कस्टम इंस्टॉलेशन लोकेशन, नो यूज एन एग्जिस्टिंग SQL सर्वर, मेरे पास कोई SQL सर्वर तो है नहीं डेटाबेस के लिए, यूज एन एग्जिस्टिंग, नो, इंपोर्ट नो, इंस्टॉल। थाउजेंड MB। ओके, okay, so disk space is not available. Let me give another try. Okay, if I use express settings, insufficient SQL disk space available. 1 GB only is available. Why is that so? Uh, Mm-hmm. this will be stored in C drive, I guess. हाँ, तो C ड्राइव तो मैं हूँ यहाँ पे 25 GB तो है, I think. Oh, okay. Ah, there is no space. अच्छा, नहीं नहीं, मैं disk space I have expanded but it's not reflecting, it seems. So this is the VM and this VM has got good space. Should be 25 GB. Let me do one thing. I'll stop this server. I'll have to for the settings. Expand. It's currently 25 GB already.
Mhm. 13 GB. Let me just restart क्योंकि मैं इसका disk edit कर चुका हूँ already. It has been expanded to 25 GB from 15 GB, but it's not being detected it seems. इसको एक बार properly restart करते हैं. Hmm, let's- yeah. So maximum disk size 25 है. Current. Okay. ठीक है. Should be fine now. It's getting restarted. It may take some time. Meanwhile, I'll stop the recording. We'll